Hi, good afternoon, everyone. Welcome to Vihan Overseas webinar uh, of Writing Task 2. Today, we are going to understand how to write an effective introduction paragraph for your essay. That is task 2 of your writing module. It is really important to understand that what are the steps to be followed to write the introduction paragraph of this, and we are going to convert this into three main steps of writing an introduction paragraph. And let's just begin. Okay, so over here, as you can see, yes, over here, as you can see, there are three steps of introduction for IELTS essay writing. And the first step is a generalized background sentence. That is, when your topic is given to you, you are supposed to think of a background sentence to write in it. Then comes paraphrasing or rewriting the controlling idea. Controlling idea is nothing but the topic that is given to you. And lastly, the third thing is the thesis sentence. Thesis sentence is something that tells the examiner what the essay is going to do. These are the main three steps of writing an introduction paragraph for your essay. Okay. Moving forward, what is a generalized statement that we will understand in detail now? So, a background sentence is a wider area or idea that is in complete alignment with the given topic. Okay, so basically when you read the topic, your background sentence should relate with the topic. It should not be anything out of the topic or anything near to the topic. It should be according to the topic. Okay, फिर the second step, दूसरा step is it look at the controlling idea in broader perspective and gives a reasonably length description of it. What is a broader perspective? Think of it like this, that when you read something, for example, the topic is about health. Okay, you read something and you think of it in a wider sense. Okay, not only in a sense that what the essay is asking you or what the essay could have mean, but related to the real world, related to the real world, and think in a broader perspective that this topic is related to what. Okay, for example, your topic is on obesity or overweight children. Okay, so what is happening in the world right now, that is what you have to understand. Okay, then it is just one sentence. Do not stretch the background more than a sentence. So background sentence is just one sentence. You do not go beyond it, because when your examiner is looking into your introduction paragraph, they are not looking for a background only. They want to understand कि ऐसे में आप आगे क्या लिखने वाले हो. ठीक है, they want कि what is the essay about. So when you have 250 words, you are supposed to highlight more on the main content rather than giving just a background. So it is recommended, okay, that you put only one sentence as a background sentence. And then this is your example. For example, now we will talk on the topic. Those were the steps. Okay, now we'll talk on the topic how we are supposed to make it. The question is, car ownership has increased so rapidly over the past 30 years that many cities in the world are now facing severe traffic issues. Okay, so this is your main topic or controlling idea. This is your controlling idea, because this is what is going to go throughout the essay. You are going to discuss this topic throughout the essay. So this is your controlling idea. So read it, understand what is the main subject over here. Car ownership has increased. So first, the essay is going to talk about something about car ownerships that is going to that has increased over the past 30 years, that many cities in the world are now facing severe traffic issues. So okay, it is about traffic issues. And then what is asked, what according to you are causes and effects of this? So when you
are asked what are the causes and effects of it. So causes and effects of what? Causes and effect of car ownership, causes and effect of traffic issues? No, it is causes and effects of traffic issues. Traffic issues is something that you are highlighting on. It is not on car ownership. Okay. But when you are supposed to write an introduction paragraph, the first thing you are supposed to think is not only think that what you are going to write ahead in your body paragraphs, but first of all just think introduction paragraph, how smoothly are you going to introduce your content. Okay. Pehle to car ownership increased so rapidly over the past 30 years that many cities in the world are now facing severe traffic issues. This is what it is. तो ट्रैफिक इश्यूज हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि उसके कॉज और इफेक्ट हमें देने हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक इश्यूज लिखा है, ओके। तो ट्रैफिक इश्यूज के हिसाब से क्या कॉजेज होंगे और क्या इफेक्ट्स होंगे उसका आप अलग से टेबल बनाओगे। बट एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड सेंटेंस, ठीक है। तो अगर ट्रैफिक इश्यूज हैं, सो ट्रैफिक इश्यूज को लेके उसको अब हम हमारे जो प्रीवियस स्टेप्स हमने जो डिस्कस किए थे कि थिंक ऑफ इट इन अ ब्रॉडर सेंस, राइट। तो थिंक ट्रैफिक इश्यूज के बारे में आप ब्रॉडर सेंस में क्या सोच सकते हो। सबसे पहले अगर आप ट्रैफिक इश्यूज के बारे में सुनते हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या क्लिक होती है? मे बी योर सिटी, द ट्रैफिक सिनेरियो ऑफ योर सिटी और योर कंट्री और मे बी इन द वर्ल्ड। इट कैन बी बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग इन अ ब्रॉडर वे यू कैंट थिंक ऑफ मेरे घर के आसपास कितना ट्रैफिक है। You have to consider in a broader way, you have to consider a broader area, can be your whole state, can be your whole country, and can be your whole this world globally, the issue of traffic, right? And the main thing over here is that in the question you are given that years that many cities in the world, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो फिर जब हम ब्रॉडर सेंस में अगर उसको सोचते हैं तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ट्रैफिक को लेके, उस तरह सोच के एक बैकग्राउंड सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द होल क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड। We read it, okay, and we understood that there were two subjects, one is car ownership and second is traffic issues. Second thing is identify the subject of your controlling idea. We know identifying the subject, it is traffic issues. And then generalize the subject in broader perspective. Now generalize it that, for example, you can say that the whole world is facing the burning issue of traffic these days. Okay, this is your background sentence because you are including the whole world in it. Okay, and you are not diverting from the main subject, that is traffic or problems because of traffic. So this is what your background sentence can be. And then it is something happening in the country or world. This is what you are going to ask yourself, right? So this can be your background sentence, a sample of it. Everyone will write different things, okay, while thinking about a background sentence. So it is not an issue that I have written something and you have written something and somebody else has written something else, okay. As far as we stick to the topic, as far as we are not diverting from the subject. So over here the sample is world is facing many burning issues currently and traffic is one of them. Okay, simple background sentence, a simple background sentence this is, because we followed all these steps. Read the whole question word by word, identifying the subject, we generalize the subject completely, okay. And again, if it is not given, अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है that world या city या country कुछ लिखा नहीं है, तो you ask yourself that is it something that is going on in the world. For example, दो सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो लोग के, some people think this and the other people think this, then ask yourself that are these subjects something that is going on in the world right now, going on in the society right now. And then you can include that in your generalized statement, because general, it is a general statement, it is a background, it is a background for something precise. So when it is a background, it is supposed to be a wider, a general term, okay. So something people deal with every day or not. Are people dealing with it every day? Yes, they are dealing with it.
World is facing many burning issues currently, and traffic is one of them. So this is your background sentence. Now we will move forward to the second sentence of your introduction paragraph, which is simple paraphrasing of your controlling idea. Okay, what is paraphrasing of your controlling idea? Paraphrasing मतलब simple है. Paraphrasing यानी आपने जो controlling idea पढ़ा, जो question पढ़ा, उसी को word by word rewrite करना है. ठीक है? So first of all, simply read the topic word by word and think of synonyms for each word. एक एक वर्ड रीड करो जो क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके सिनोनिम्स यानी कि दूसरा इंग्लिश वर्ड उसी वर्ड के लिए दूसरा इंग्लिश वर्ड क्या है वो सोचो, ठीक है, उसको वर्ड बाय वर्ड पुट करते जाओ अपने हिसाब से, ठीक है, डोंट राइट इट बट थिंक ऑफ इट और वर्ड बाय वर्ड उसको समझते जाओ. बट यस, व्हाट यू आर सपोज टू डू दैट समटाइम्स you are cannot change the word, maybe you can change the form of it. For example, the word is given improve, so you think that improve is a good word, you don't want to change that word, so you can change the form of it. You can write improve के बदले improving. Okay, form of it का मतलब tense हो सकता है उसका, ठीक है, you change that and you write it like that sometimes, because not all the time you are going to find good words or good synonyms of the given words, but if you are not able to find it, maybe you can change the form of it. And why we are doing this? Because we are not supposed to copy any word from the question. Why? Because IELTS में एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, लेक्सिकल रिसोर्स. लेक्सिकल रिसोर्स मतलब आप कितने वोकैबुलरीज को इंक्लूड कर सकते हो आपके राइटिंग में, ठीक है. सो वोकैबुलरीज इंक्लूड तभी कर पाओगे जब आपको सामने जो दिया हुआ है लिखकर, ठीक है, उसको तुम अलग वर्ड्स में भी लिख पाओ. कंटेंट जब बनाओगे तब तो आप वोकैबुलरी यूज करने ही वाले हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप क्वेश्चन को एज इट इज लिख रहे हो तो व्हाई नॉट चेंज इट into different vocabularies rather than just copy pasting that thing. You can't do that because that will just show that you just copy pasted the same thing. You could not think of anything new. आप कुछ नया नहीं सोच पाए, ठीक है, और हमें ऐसा एग्जामिनर को कोई इम्प्रेशन नहीं देना है, ठीक है. आप जो लिख रहे हो आपको उसी के हिसाब से ग्रेडिंग मिलने वाला है, तो why not write it in the best way possible. Okay, make sure you do not change the meaning of the sentence. This is most important. Most important. If in your question it was written 30 years and you write half a century or you write a decade, then you are changing the numeric data of your question, which is wrong, which is changing the meaning again, because वहां 30 years दिया है तो maybe you can write 3 decades, last 3 decades, but just writing decades, a general decades, not even mentioning how many decades, okay, will be wrong, because they have specifically mentioned 30 years, so you have to specify that properly. But you cannot assume anything and you cannot change the meaning or the subject or anything from the question. This is something that you have to take care of. So while paraphrasing your controlling idea, just make sure that you are using synonyms, you are changing the form of the words, but you are not changing the meaning anywhere. That is a big thing that you have to take care of. Okay, now we'll move to how to frame this same thing, the paraphrasing thing, right? So this was our question. Car ownership has increased so rapidly over the past 30 years that many cities in the world are now facing severe traffic issues. Read it one by one. Car ownership, okay, increased so rapidly over the past 30 years. Maybe past 30 years, you can say last 3 decades, that many regions in the world or many parts of the world or in many parts globally now are facing severe traffic issues. So this is something that you have to change words of. Okay, how can we do that? Ask yourself a question: that is this topic an observation, an argument, or a suggestion? What is it? Is it a suggestion? Is the topic suggesting anything? No. Is it an argument? No, because if it were an argument, तो दूसरी पार्टी क्या बोल रही है वो भी सामने बोला होता.
सो इट इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन बिकॉज इट इज ऑब्जर्व्ड कि पिछले 30 साल से ये हो रहा है तो उसकी वजह से अब ये हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज कम. सो नाउ दिस इज व्हाट वी कैन बिगिन विद. जब आपको ये क्लियर है कि आपका कंट्रोलिंग आइडिया ऑब्जर्वेशन है, आर्ग्यूमेंट है या सजेशन है, तो इट बिकम्स इजी. आसान हो जाता है शुरू करना. कि इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट, अगर आर्ग्यूमेंट है तो इट इज मोस्टली सजेस्टेड दैट, अगर सजेशन है तो, और अगर ऑब्जर्वेशन है तो यू कैन ऑलवेज बिगिन विद इट इज ऑब्जर्व्ड दैट in the past 3 decades there is a sudden surge मतलब increase in car owners. Now see, over there it was ownership and we converted or we changed the form of the word into owners, car owners. Okay, not car ownerships but car owners, ultimately resulting in vehicular congestion, that is the traffic. Simple. Traffic is one word, we converted it into two words, that is vehicular congestion. Now we are increasing one word over here. Since we have a word limit of 250, we are supposed to write beyond 200. ठीक है, 250 वर्ड्स की हमारी वर्ड लिमिट है. तो हम अगर इसी टॉपिक को जैसा है और वैसे सिनोनिम्स में ही लिख लेंगे और वर्ड्स शायद इंक्रीज नहीं करेंगे, तो फिर शायद हम आगे जाके अगर बॉडी पैराग्राफ्स में भी वर्ड्स इंक्रीज नहीं कर पाए तो हो सकता है कि हमारे 250 वर्ड्स भी कंप्लीट नहीं होंगे, विच विल अगेन बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग बिकॉज मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. बिकॉज अगर आपका ऐसे बोल रहा है राइट अबाउट 250 वर्ड्स, सो यू हैव टू एटलीस्ट रीच 250 वर्ड्स. इट इज रिकमेंडेड कि आप वो 250 वर्ड्स क्रॉस करो. ठीक है, बट कहीं कहीं आपको वर्ड्स तो बढ़ाने ही है. सो ओवर हियर वी हैव ट्रैफिक को क्या लिखा, वेहिकुलर कंजेशन. सो एक वर्ड यहाँ हमारा बढ़ गया, across the globe, so in the world, in various urban areas. Why urban areas? Because we are talking about many cities. So cities, जब आपको cities के बारे में बात करते हैं तो cities सुन के सबसे पहले another word for it that comes is urban areas. If you want to write something else, it can be metropolitan cities or metropolitan areas of the state, something. Okay, something that represents a city. Suburbs won't come. Suburbs is what? Suburbs is something that is outside a city, outskirts of the uh, city, right? So urban area, metropolitan area. Okay, those are the things that can come. Downtown can also come, but downtown is mostly including commercial activities and stuff. So you can, according to your knowledge, change words and everything, right? So this is what it is. This is how we have changed and paraphrased words. It is observed that in the past 3 decades there is a sudden surge in car owners, ultimately resulting in vehicular congestion across the globe in various urban areas. Same thing, meaning change नहीं हुआ है and words increase हुए हैं surely, but that's a good thing. Words increase karna is a good thing. Now we'll move to the third part, the last part, but still the most important part of your introduction paragraph. Agar thesis statement nahi hai, your introduction paragraph is incomplete. Okay, so we'll move forward to thesis sentence. A thesis sentence is the part that informs the examiner what to expect further in the essay. So this is the definition of thesis sentence. Okay, thesis sentence basically is the last sentence of your introduction paragraph. ठीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस जो बताता है एग्जामिनर को कि आगे जब वो ऐसे रीड करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, बॉडी पैराग्राफ में उनकी एक्सपेक्टेशन कहाँ तक जा सकती है, क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर नहीं होने वाला है. ठीक है, द डिटेल्स यू आर गोइंग टू गिव इन द बॉडी पैराग्राफ्स शुड बी ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड इन द थीसिस लाइक एन आउटलाइन. ओके, सो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स, what are the causes and effects of this situation. So causes और effect तो आप body paragraph में explain करने वाले हो, लेकिन उस thesis sentence की वजह से पता चलना चाहिए कि आप causes और effects body paragraph में mention करने वाले हो. So that is a brief idea of your body paragraph, but not the detail, क्योंकि आप जो details है causes जो cause आप लिखने वाले हो वो introduce नहीं करोगे introduction paragraph में, वो सिर्फ और सिर्फ body paragraph का part है.
ठीक है. It answers to the last part of the main question. जो हमने last जो question पढ़ा था हमने, ठीक है, उसमें जो last line थी, that what are the causes and effects of this trend, so that was the last part of the question, and your thesis sentence answers that. Always, in all the kinds of essays, your thesis sentence answers the last part of your essay question. Okay. And do not give away too much information in this sentence. This is the main thing, because I come across students जो थीसिस सेंटेंस लिखते हैं और थीसिस सेंटेंस इतने डिटेल में लिख देते हैं कि बॉडी पैराग्राफ में जब वो वही चीज लिखने की कोशिश करते हैं तो रिपीटेशन फील होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी डिटेल्स आपके थीसिस स्टेटमेंट में दे दी है. ठीक है, तो जब हमने बॉडी पैराग्राफ बनाया तो बॉडी पैराग्राफ के अंदर भी वही चीज हमने लिखी और वो रिपीटेशन में चला जाता है और वहां पे मार्क्स कट जाते हैं, बिकॉज आपने एक ही की एक चीज दोबारा लिखी. तो हो सकता था कि कुछ नया लिख सकते थे. ठीक है, दैट इज व्हाट examiner also expects. और वैसे भी examiner doesn't expect any detail of your body paragraphs in introduction paragraph. You know, it is an introduction paragraph for a reason, क्योंकि वो body का detail उसमें नहीं देता है. It is just an introduction, it is just brief idea. So never go in detail in your thesis sentence. So now we will look at the whole introduction paragraph. We will understand what we did. Okay, so this was our question. Car ownership has increased so rapidly and everything. And what according to you are causes and effects of this? So it is asked that what according to you. So when they have already asked according to you, तो हो आप अपने thesis में I लिख सकते हो. I think that. If you is not given, तो I mention मत कीजिए. ठीक है, because your own personalized opinion it becomes. आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है you, तो फिर your own personalized opinion can come. So now over here you become eligible of writing I in this, that I think or I believe that according to me, something like that. Okay, it is really important to go through the IELTS task to question thoroughly, because one minor mistake will ruin your introduction paragraph. And if your introduction paragraph only starts to show errors, तो बॉडी पैराग्राफ का स्क्रीनिंग और भी टफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग और भी एरर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ही इतने एरर मिल गए अगर एक आध दो, तो फिर बॉडी पैराग्राफ में ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी हो एरर्स मिलने की. सो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाते वक्त, स्पेशली इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाते वक्त, आप पूरे क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड प्रॉपरली रीड कीजिएगा. ओके, सो दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट. ओके, in this essay, why? Because this essay thesis statement is what it is the description of what the essay will do. So in this essay I will discuss the reasons for such a thing to happen, along with highlighting the outcomes of it. I will discuss. So because in the question it is already written according to you, you can write I. ठीक है ना? So in this essay I will discuss the reason for such a thing to happen, along with highlighting the outcomes of this. So यहाँ पे आपको effects लिखा था, तो हमने effects को क्या पैराफ्रेज किया? Outcomes. ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा था कॉजेज, तो हमने उसको कैसे पैराफ्रेज किया? रीजंस. कॉजेज का मतलब रीजंस होता है और इफेक्ट का मतलब आउटकम्स होता है. उसके अलावा आप और भी वर्ड्स लिख सकते हैं. कॉजेज के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सोर्सेस. फॉर सोर्स वी विल डिस्कस द सोर्सेस ऑफ सच things to happen, या फिर sources of the given topic, and highlight the outcomes. Outcomes का दूसरा synonyms क्या हो सकता है? Consequences. Consequences is one synonym. Results is one synonym. ठीक है. Effect. Effect. Results is also one synonym. Consequences is also one synonym. ये तो हो गया एक thesis statement. ये sample है. जरूरी नहीं है कि आप यही का यही लिखें. ठीक है. This is just a sample. So this is what you are expected. Same cheese. Now another way of writing this thesis statement. This. The discourse ahead highlights some of the main sources. Again, we are not writing the word causes of the issue, and of the issue. Why? Because it is a severe traffic issue. Matlab it is a problem. So sources of the issue, and will also suggest few consequences it brings. मतलब
इफेक्ट्स जो उसकी हो रही है वो समझाएंगे। और देखो जो सेकंड थीसिस स्टेटमेंट हमने बनाया है उसमें आई वर्ड यूज नहीं किया है। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर आपको आई वर्ड यूज नहीं करना है या फिर अगर आपके क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू यू वाला वर्ड नहीं दिया, जहां पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको आपका ओपिनियन देना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ न्यूट्रलाइज्ड वे, दिस इज द न्यूट्रलाइज्ड वे जिस तरह से आप एक थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हो। The discourse ahead highlights some of the main sources of the issue and will also suggest a few consequences it brings. So these are two ways. This is one opinion wala. I will discuss the reasons for such thing to happen. या फिर a neutralized general thing, ठीक है, without an opinion. The discourse ahead या फिर the essay ahead will highlight. Discourse मतलब content, the paragraph ahead. Okay. So discourse के बदले ऐसे भी लिख सकते हो आप, that the essay ahead will highlight. So this is your thesis. Now we will look at the whole paragraph. So this was your question, and this is your whole paragraph that we framed. Car ownership has increased so rapidly over past 30 years that many cities in the world are now facing severe traffic issues. So background sentence went to world is facing many burning issues currently and traffic is one of them. Background, simple background, nothing to do with any word in the question, okay? But still according to the topic, so check good marks on that. It is observed that in the past 3 decades there is a sudden change or sudden surge in car owners, ultimately resulting in vehicular congestion across the globe in various urban areas. Again, check because most of the words of the question were paraphrased. Make sure that 70% of the words in your question you are replacing. एटलीस्ट 70%। हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आप फॉर्म चेंज कर रहे हो, कुछ छोटे मोटे वर्ड्स हैं जैसे प्रिपोजिशंस हो गए, इन, द एंड ऑल दैट, वो तो कहीं चेंज नहीं कर सकते आप क्योंकि उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, दोज आर नेसेसिटी, ठीक है। वो वर्ड्स आप रिप्लेस नहीं कर सकते और मैं वो रिप्लेस करने को आपको कह भी नहीं रही हूँ, बट एटलीस्ट 70% ऑफ द वर्ड्स यू कैन चेंज बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सो वी हियर इन द सेकेंड लाइन वी कैन सी दैट मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, वर्ड्स अलग यूज किए हैं। सो अगेन चेक, फर्स्ट सेंटेंस चेक, सेकंड सेंटेंस चेक, and now the thesis. Is the thesis giving me an idea of what to expect in the body paragraph? Let's see. The discourse ahead highlights some of the main sources, okay, of the issue and will also suggest a few consequences it bring. Okay, simple and short, क्योंकि हमने consequences like ये और ये या फिर इफेक्ट लाइक ये और ये वो मेंशन नहीं किया कि कॉजेस जो है, जो कॉज है, ठीक है, कि मैं आगे अपने डिस्कोर्स में जो कॉजेस मतलब डिस्कस करने वाली हूँ ट्रैफिक इश्यूज के बारे में, वो ये और ये है, वो नहीं लिखना है हमको क्योंकि हमें वो ब्रीफली आइडिया देना ही नहीं है। इट्स एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, तो उसका हमें आइडिया नहीं देना है, वो हम जब बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे उसके फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है, एज एज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट बॉडी पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन जो होती है जो टॉपिक सेंटेंस उसमें लिखेंगे, बट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में वो डिटेल नहीं देंगे। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना बताएंगे कि हम बॉडी पैराग्राफ में क्या करने वाले, दैट्स इट, ठीक है। सो अगेन थ्री थिंग्स, the first sentence being background sentence, a generalized sentence on the basis of the topic subject. So read everything one by one, see what the subject is, finalize the subject. कार ओनरशिप इंक्रीज हो रही है उसके बारे में है या ट्रैफिक के, पूरा रीड करके समझिए कि किस चीज के बारे में। इट इज अबाउट ट्रैफिक क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर है, कॉज और इफेक्ट क्या होती है ट्रैफिक बढ़ता है तो, ठीक है। सो ट्रैफिक इश्यू उसके बारे में है, तो ट्रैफिक इश्यू को लेके हम बैकग्राउंड सेंटेंस बनाएंगे एंड नॉट कार ओनरशिप, ठीक है। कार ओनरशिप के ऊपर बैकग्राउंड सेंटेंस बना, मार्क्स कट, रॉन्ग, ओके। Paraphrasing is the easiest part because it is already given, all you have to do is think of different word, done. And thesis can never go wrong if you have good practice, and especially if you don't include details. So thesis can never go wrong because again आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही होगा टॉपिक सेंटेंस के नीचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक सेंटेंस डिस्कशन
कर रहा है दो चीजों को लेके कि कुछ लोगों को ये लगता है और कुछ लोगों को ये लगता है, तो नीचे लिखा होगा कि डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो आपको आपको अगेन थीसिस सेंटेंस में उसको आंसर करना है, सो यू विल बी राइटिंग आंसर ऑफ दैट, यू आर आंसरिंग discuss. So I will discuss both the viewpoints of the society and give my opinion further, या फिर you can also give the opinion like that. So that is what we will discuss at some other time. But जो लास्ट लाइन होती है उसको आंसर करना होता है, वो आपका थीसिस है. दिस कैन नेवर गो रॉन्ग इफ दिस थ्री थिंग्स आर वेरी क्लियरली अंडरस्टूड टू यू. सो आपका इंट्रोडक्शन सेट है, आप बना सकते हो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ प्रॉपरली. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट रिपीटिंग मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द होल क्वेश्चन. ठीक है. इवन थीसिस में भी यहाँ पे कॉज और इफेक्ट लिखा था, हमने उसको कॉज और इफेक्ट को चेंज करके सोर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस कर दिया. ठीक है. या फिर कुछ और वर्ड्स यूज किया, आउटकम कर दिया फॉर एग्जाम्पल. सो उस तरह से वर्ड्स अलग कर दिए, वर्ड्स चेंज कर दिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है. वर्ड्स का रिपीटेशन मत कीजिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी जो दिया है उसको रिपीट मत कीजिए. ठीक है. क्योंकि हमें लेक्सिकल रिसोर्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना है. बॉडी पैराग्राफ में मौका मिलेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में भी हम मिस क्यों करें. ठीक है. तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू, नॉट यू कैन, यू हैव टू फॉलो फॉर अ गुड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. क्योंकि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अगर इफेक्टिव है तो एग्जामिनर को आगे अच्छे से एक इंप्रेशन आ जाती है कि आगे बॉडी पैराग्राफ में भी सब सही रहेगा. और आपको भी जब भी आप ऐसे की प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बढ़िया है, आगे बॉडी पैराग्राफ भी इतना क्लियरिटी के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है. तो मेक योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सिंपल एंड स्लीक, एकदम स्लीक. 3 लाइन्स, दैट इज बैकग्राउंड, पैराफ्रेजिंग एंड थर्ड लाइन लास्टली इज थीसिस. ये 3 लाइन क्लियर होनी चाहिए एंड योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज डन फॉर एवरी एसे. ठीक है. फॉर एवरी एसे प्रैक्टिस लाइक दिस ओनली. पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके. this is was what it is, and I hope introduction paragraph is clear to you. Thank you so much, and we will see you in next lectures. Thank you so much. Bye bye. In the comment section, also mention what else you wanted to see, or what else are your doubts, and what would you want us to make content of. Okay. So, in your comment section, we hope to see your suggestions. Other than that, bye bye. Thanks.